ब्रेकफास्ट रे मु आनी उपमा पूरी सैंडविच आउ स्प्राउट्स आउ ये आमर सांबर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आमर डे 2 कलकत्ता रे कहीं मोर 3 दिन रो गोटे ट्रेनिंग सेशन अच्छी कंपनी तरफ रू। डे 1 रे जहाँ भी थी मोर वीडियो एडिटिंग चली बहुत जल्दी मु अपलोड करी। एबे टाइम है 9:30। फास्ट आम जमती कि आमर 30 डेज पुशअप और स्क्वाट्स चैलेंज रो एबे टाइम चली। तो फास्ट आम एबे सकाळ उठले मु फ्रेश टिके हो जाइए एबे जिबा एक्सरसाइज स्टार्ट करिवो। तापरे तळकु जिबा ब्रश मु करिछि हला। तळकु जिबा फ्रेश होइकी गाधेइकी तळकु जिबा ब्रेकफास्ट करिया पे। तापरे हमर ट्रेनिंग स्टार्ट होबो। ओके, आउ सब जिनछ ट्रेनिंग रे जहाँ भी जिनछ हम जमती कि फास्ट वीडियो जमती थिला सेकंड वीडियो सब जिनछ देखैबी। आज सेकंड डे रे हमर नी रो डिटेल्स रे कुहाबो आ ता सहित शोल्डर भी कुहाबो। फास्ट डे रे हमर ओनली नी ऊपर थिला। चलो वर्कआउट स्टार्ट करिबा। वर्कआउट पई तो मु अलगा वीडियो बनेबी। ओके, लेट्स गो। मु गाधे सारलिणी। एबे आमे जिबा तळकु ब्रेकफास्ट करियाकू आउ ड्रेस फ्रेस पिंधापिंधि करवा। तापरे जिबा मोर वर्कआउट भी सरी जोटा वर्कआउट करूली पुशअप और स्क्वाट्स चैलेंज रो। ड्रेस पिंधिबा तळकु जे खायाकू। तापरे हमर 10:25-30 रे हमर स्टार्ट होबो ट्रेनिंग। ओके, लेट्स गो। जिबा तळकु खाइयाकू। आमे 5 फ्लोर रे थिलु। ग्राउंड फ्लोर रे ही अछि हमर खाइबा जिंस सब। देखिबा कोन सब अछि। ब्रेकफास्ट रे हमर एठी ब्रेड टोस्ट अछि आउ पूरी आलू कषा आउ एठी हमर उपमा सांबर अछि। तो ब्रेकफास्ट रे मु आनी उपमा पूरी सैंडविच आउ स्प्राउट्स आउ ये आमर सांबर। एटा खाइबा फास्ट। तापरे हमर ऑलरेडी टाइम हेलानी जीवा पे ट्रेनिंग को। मुझे नॉर्मल ड्रेस पिंधि के आसी कि खाई सारा पर मु ड्रेस चेंज करी ट्रेनिंग सेशन को जीवी। तो मुझे डोसा मगई थी। एटा हूँ प्लेन डोसा, मसला डोसा ना, एमटी डोसा। आउ गोटे मु कही कि आलू पराठा पाई, सॉरी आलू पराठा नहीं पनीर पराठा अच्छी। सेटा आसले सेटा खाइबा। हमर पनीर पराठा आसीगलानी। पनीर पराठा खाई के देखिया केमती टेस्ट अच्छी। पनीर पराठा संगे दही बेस्ट कॉम्बिनेशन। नॉट बैड, एते भल लगुनि, बस चलेगा। देख पड़ते पनीर पराठा सब खाइबा सरिया पर मु फ्रूट आनी। एथिरे अच्छी पपाया, वाटरमेलन। मु खाई के आसीगली। एबे जिबा लेट हेलानी बहुत जोर से। एबे जिबा ट्रेनिंग हॉल को। ड्रेस टा चेंज कर दबा। सार्ट अवस्था नहीं।
So it may take little time. बट ये बहुत अच्छा हो जाएगा. हाँ, but Point ये सबके लिए. आप अभी नोट कर सकते हैं ना. अभी जब हम आंसर डिस्कस करेंगे नोट डाउन करिए, आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा. Right? Treatment options and meniscus fusion options. Okay. So I also discussed about the capitals a little bit yesterday, right? We will move towards the ligament, and the most important ligament is the ACL. Of the lateral femoral contact. मैंने सिंप्लीफाई कर दिया. It is the anterior to the tibial spine. Okay. Yeah. Okay. इसे हम partial tear भी कहते हैं. But अभी भी दोनों जगह से वो जुड़ा हुआ है फीमर और टिबिया का. ठीक है. तीसरा complete tear. बीच में से टूट गया या कहीं एक साइड से पूरा पड़ गया फीमर या टिबिया की साइड से. So the ACL reconstruction. The first one is BTB graft. Okay. Fan and remove it proximally and distally in the incision. A key elevator can be used to clear soft tissue proximally and distally. A retractor can be used while an arthroscope is guided proximally to visualize the tendon. Identify the VMO and stay lateral to this landmark. Advance the scope proximally until the musculotendinous junction of the rectus femoris is visualized. Turn the lens of the scope toward the skin so the light can be seen through the skin. This is the proximal limit of the graft and marks the direction of the graft harvest. Mark the skin at this point for reference. The width between incisions should correlate with the desired graft diameter. Make the longitudinal incisions and continue them distally toward the patella until contact is made with the bone. The surgeon should note that approximately 2 centimeters of tendon length needs to be dissected and released. Use a fiber loop suture to place a tagging suture 1 centimeter from the end of the graft. This suture is used to maintain tension on the graft during tendon harvesting. The weight of the needle can be used to shuttle the tagging sutures through the cannulation of the quadruped tendon harvester. Alternatively, a lasso wire can be used for shuttling the tagging suture. Advance the tendon into the tip of the harvester, ensuring the suture is not cut by the harvester tip. Keep steady, gentle tension on the suture and begin rotating the harvester using controlled quarter turns, all in the same direction, directing the harvester toward the proximal mark on the skin. Once the desired graft length has been stripped, the quadrotendon harvester can be withdrawn from the incision and the graft can be retrieved through the graft cutting window by grasping the tagging sutures. Advance the quadrotendon harvester back into the incision. When the appropriate graft length is reached, insert the push rod into the harvester. Keep tension on the tagging suture and advance the push rod forward to amputate the graft. Thickness कितना होना चाहिए? 8 mm. 8 mm कम से कम होना चाहिए. Drill pin. Drill a tunnel at the center of the femoral ACL footprint. Using the eyelet of the ACL tunnel drill pin, pass a fiber-like suture tape and snap in a retrograde fashion. Using a flip cutter 3 reamer and the appropriate size tap is then inserted over the guide wire and driven to a depth that approximates the screw length. A fast thread interference screw can then be implanted over the guide wire on the free edge of the bone plug away from the tendon. Insert the of the graft and remove the guide wire. Coupling diameter. The knee can be tested through a range of motion. টিবিয়া কোটা ফাইবার টুটা লস করে গয়া ও দি দুটো বলে না হ্যাঁ দিন আমরা ইয়ার করতে ইন্টারনাল রিলেশন कितना तक जाएगा हाँ हीलिंग बहुत ले लिए सब लोग. हाँ नहीं लाइव नहीं ब्लॉग. हाँ ଏବେ ଯିବା ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ. ଲଞ୍ଚ ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସୋଲ୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ. ପନିର ଡାଲି ଏଇଟା ମସଲା ନାନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ତମେ ଆଣିଛ ନା ଏଇଟା ମସଲା.
ये जो पिन है ना इसमें करेंगे जस्ट इसका बुलेट चेंज हो जाएगा। बुलेट आपका वो जो 2.4 का है में करते हैं गाइड टू बुलेट टू इसको थोड़ा आगे ले जाना है, ठीक है। थोड़ा आगे ले जाने के बाद हम लोग इसको पहले घुमाएंगे, फिर घुमाते हुए वापस आएंगे। For the shoulder to remain stable, many anatomic factors come into play. Before understanding its biomechanics, it is important to understand the shoulder's complex anatomy. The osseous anatomy of the shoulder consists of the humerus, scapula, and clavicle. So it's like this. Can you see here the patch over this? Yes. ये पैच है, ये ऊपर हमने लगा दिया। ओके